Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. And in this video, we will be talking about the internet and www part 2. Uh, in yesterday's lesson, we have also talked about the same topic जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट क्या होता है and how the internet works and how the different browsers like different IP protocols work. So आज basically हमारा main focus रहेगा about web browsers और functions of web browsers. फिर हम देखेंगे कि web pages क्या होते हैं, right? And then how to make web pages, how we can make those web pages. Then we will be having some introduction class of HTML and CSS, and then at the end we will be talking about cookies and its purposes. So these are all objectives. So once again, I welcome you all in my channel, that's CS by SS. So first of all, let's just see what is web browsers. So basically, a web browser is a piece of software. It's an application that is used to access and display information on the internet. बेसिकली वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन होता है जो सिर्फ उसका काम ये होता है हमें कि डिस्प्ले करवाना है इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हैं, लाइक जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी वीडियोस हैं, जितने ऑल द वेबसाइट्स ऑन द internet, it will display all the resources, right? So the main purpose of web browsers, basically to main purpose of web browser is to render a hypertext markup language and displays web pages. And in this video we will be talking about web pages as well and how we can make web pages. So shortly मैं आपको बता देती हूँ कि web pages एक सिंपल जो भी आपको पेज डिस्प्ले होता है इंटरनेट पे उसको कहते हैं, राइट? और वेब पेजेस को लिखने के लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एंड वेब ब्राउजर्स का पर्पस है कि वो रेंडर करे एचटीएमएल को एंड डिस्प्ले करे वेब पेजेस को. एंड देन a web browser interprets the code in HTML documents and translate it into a visual displays for the user. So it's just going to translate the web pages and it's going to display the visual for the users. यानी कि जो हम वेब पेज देखते हैं जब बैकएंड पे कोडिंग हो रही होती है तो वो वेब पेजेस वैसे नज़र नहीं आते जैसे हमें नज़र आते हैं. It's all about the web browsers so that we can see the good and amazing interfaces of websites. There are a lot of functions of web browsers. I hope आप लोग को वेब ब्राउज़र क्लियर है. जितने भी हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, ये तमाम वेब ब्राउज़र्स देखते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, उन सबको वेब ब्राउज़र्स कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैंने कुछ वेब ब्राउज़र्स के फंक्शंस को मेंशन किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंडर एचटीएमएल to display HTML or web pages. Storing bookmarks and favorites. I hope you know that how these web browsers will help us to bookmark something. और bookmark का फ़ायदा ये होता है जो भी आप किसी भी चीज़ को bookmark कर लेते हो एंड तो उसको हम लोग वी कैन इजीली एक्सेस थ्रू यूजिंग वेब बुकमार्क और फेवरेट बेसिकली जो आपकी वेबसाइट्स के लिंक के बिल्कुल एंड पे आपके पास एक स्टार होता है, उस पे क्लिक करोगे तो दैट लिंक विल बी बुकमार्क्ड एंड देन यू कैन access that link without any help. Recording users history. We can see the history of the users. Allow using of multiple tabs. I hope it's clear that we can open multiple tabs on on the web browsers and then we can switch those tabs as well. Storing cookies as well. It's very important question that what are the cookies. So in this video we will be talking about cookies in detail. अभी सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि वेब ब्राउजर्स हमें हेल्प करता है कुकीज़ को डिस्प्ले करवाने में एंड देन स्टोर करने में और हाउ द कुकीज़ आर बेसिकली हेल्प अस we will be talking about in later in this video. So cookies are basically small files that contains users preferences and login information for websites. So basically cookies some piece of information होता है जो हर ब्राउज़र हर वेबसाइट पे सेव कर लेता है अपने अपने जो है
इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और वो इंफॉर्मेशन हमें क्या हेल्प करती है, फर्दर हमें यूजर को प्रेफरेंसेस एंड ऑल दोज थिंग्स विल हेल्प अस टू डू द फर्दर सर्चिंग। नेविगेशन टूल्स बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन्स होते हैं हमारे पास होम पेज में जो हेल्प करते हैं हमें मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में। देन वी हैव एन एड्रेस बार उसको कहते हैं जहाँ पर हमारे पास यूआरएल शो हो रहा होता है, राइट। And it allows us to user to enter a URL or search item. Then home page, this is the initial page that appears when the browser is launched. Usually you must saw that page जिस पे Google लिखा होता है और आप उस पे कुछ भी टाइप करते हो and it's when you will press enter तो आपके पास वेबसाइट्स आ जाती है। तो जो पहला पेज जहाँ पर आप लोग टाइप करते हो that page is called home page. Right, so homepage can be customized to display frequently visited website or specific content. हम लोग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मीन्स हम अपनी मर्जी से इसके बॉर्डर चेंज आई मीन्स वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं एंड वी कैन डू अदर चेंजेस एज वेल। Next is run active scripts. Basically, these are small programs embedded in our web pages. ये हमारी web pages के अंदर ही छोटे से programs होते हैं that will interact content. Interactive content that allow interactive content such as animation, videos, pop-up windows to be displayed। जी जितने भी pop-up windows आती हैं या आपने कभी कोई ऐसी वीडियो देखी होगी, आई मीन टू से किसी ऐसी वेबसाइट को विजिट किया, जैसे ही आपने उस वेबसाइट पे क्लिक किया एंड एक वीडियो डिस्प्ले हो जाती है, राइट। सो ऑल दोज वीडियोज आर बेसिकली रन स्क्रिप्ट्स। Then downloads file, we can see that how web browsers allows us to be downloaded from the internet। हम लोग सारी उनकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, हमने कितने डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे। देन रिक्वेस्ट वेब पेजेस, when user enter a web address in the address bar, the web browser sends a request to the web server to obtain the content of the web page। The server responds by sending the web page to the browser which displays it on the screens। सो बेसिकली यही होता है जब हम लोग कुछ भी गूगल पे टाइप करते हैं, गूगल उसको जब टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो गूगल विल टेक सम टाइम एंड इट विल find out all the relevant material from its server and then it is going to be respond you back, right? So this is called request web pages। DNS, domain name servers, the web browser sends the URL to DNS। जब भी हम कोई वेब ब्राउजर्स पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो DNS को सेंड की जाती है, राइट। DNS स्टैंड्स फॉर बेसिकली डोमेन नेम सर्वर, जो क्या करता है, यूआरएल को ट्रांसलेट करता है एक आईपी एड्रेस में and which is used to locate the web server। Manages protocol, I hope you know we have already discussed about the HTTP, HTTPS and protocols in our previous video. And if you are still confused that what are the protocols, do let me know. You can, I can give you more detailed information about. Next, web pages. So web pages is basically when you type in a URL or click on a link, the browser sends the URL to the DNS using HTTP। Basically, web pages is basically the single page of a website. That's called web page. The web browser sends a request to the web server for web pages। Web pages are sent from the web server to the browser। The browsers render HTML to display web pages। जितनी भी आप वेब ब्राउजर्स पर पेजेस देखते हो, वेबसाइट्स विजिट करते हो, these are all called web pages। एक वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट is basically the collection of web pages। SSL and HTTPS is used to secure the data which will encrypt and data that is sent। Okay, so here I have a quiz for you and describe how the web pages for the websites are requested and displayed on a user's computer। We have already discussed this question in our previous slides। If you want to know the answer, you can go back and watch my previous slides, but I want that
try to write down the answers by yourself. 4 mark questions, so 4 parts are mandatory, 4 points are mandatory. So here I have mentioned the answers of all those this question. Try to read it and do let me know if there is any confusion. So the first point is the browser sends the URL to the DNS. Then DNS return the IP address to the browser. The browser sends a request to the web server and the browser interprets and render the HTML to display web pages. Now the question is how we can make web pages. So there are two parts. First is structure and then is presentation. For structure we used HTML. HTML is used for structuring or building the structure of our web pages and CSS is used for presentation. Presentation means all the styling of our website. So HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a language used to create the structure or layout of a web page, written in a plain text, used in the content layer, made up of a set of markup codes used to tell the browsers how to display the web pages. For example, where text is placed, margins of page, line break, padding. CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet. It is a language used to create the presentation, formatting of the page, written in plain language, used in the presentation layer, used by web pages to produce a consistent format between different web pages. For example, font color, font size, background color, and etc. Okay, so what is the reason behind keeping the keys separately? The presentation of the page can be changed without needing to alter the success or so structure. So regular updates can be made without needing to check the structure. So the formatting documents can be used again for a different websites. If further content or web pages are added to the websites, the necessary formatting can be easily applied. So this can save time when developing a website. CSS to standardized formatting. So CSS only needs to be created once and be applied to each web page. One person can develop the CSS and one can develop the presentation. So this can save time when developing and updating a website. So basically in this slide we had we have seen that why the HTML and CSS needs to be created separately. So the first reason they have mentioned that because it's easy to manage, one person can work on CS structure and the other person can work on the presentation. Then the second part is it's the standardized format. We can do the standardized formatting. Like if we later on in future we have added some web pages, so this CSS file will be applied to the new web pages automatically. The most important point, what are the cookies? Cookies are not biscuits, by the way. So basically, cookies are the small files that are stored on user's device by a website. They are used for various functions, saving personal information, tracking user preferences, holding items in an online shopping, storing login details, storing relevant purchases, display relevant adverts, tracking visitor statistics. So basically personal details will be help us to improve the user's experience by saving name, email addresses and other important information.
And tracking user preferences will help us to track language setting, font size, color scheme, and so on. There are two types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary and are stored only during a user's browsing session, and they are used to maintain a user state or activity during a single session, such as when filling out form or navigating through a website. But on the other hand, persistent cookies are permanent. These are stored on a user's device for a longer period of time, usually for a few weeks to several years. They are used to remember user preferences and settings such as language preferences, login details, shopping carts, items, etc. So session cookies are basically temporary, persistent cookies are permanent. Session cookies will be keeping when we are using when we are using some website, but persistent cookies will be keeping for few weeks to several years. That's all for today. I hope you really like and have learned something from this video. Thank you so much. Allah Hafiz.